Jai Hind and welcome to Open Court with MJ Akbar. Mr. Akbar is a noted writer, diplomat, public intellect and former Foreign Affairs Minister of India. Mr. Akbar has also recently released his latest book called Dulali Sahib and the Black Zamindar, Racism and Revenge in the British Raj. Mr. Akbar, thank you for joining today. In this episode, we would like to talk about Indian nationalism, the debate surrounding it, the history behind it, the origins of it. So to start off, we would like to begin with, we just celebrate our Republic Day. Subhash Chandra Bose got, honored with a statue finally being erected. And there's this new sense of optimism about India. Do you think when it comes to the debate of Indian nationalism, are we going through a renaissance similar to what happened in Europe when it comes to arts and culture? Or is it something just like a natural evolution of the conversation? You see, the history of India, in my view, was interrupted by colonialism, right? This colonialism period was a very massive blow, not only on the economy of India. Of course, the British came into an India which was, by all prevailing statistical standards, one of the wealthiest places in the world, and left it a famished land. But in my view, what was equally and perhaps dangerous and with long-term consequences was the manner in which colonialism tried to deflect, disturb and destroy the narrative of cultural synthesis, which had evolved in the past 1,000 years. And it had evolved through a huge, what would be called a huge renaissance of philosophy, a philosophy which had its roots in Indian thought, but also in which the unifying thoughts that brought in by Muslims played an effective part. And this was called famously by Dara Shikoh the confluence of two oceans. This cultural synthesis was given a term, the Wahda al-Wajud, the unity of all existence. And within that unity of all existence lay a very, very powerful Indian philosophical mindset. And you could actually draw a straight or at least a very coherent line from the poetry of Khusro. I'm not talking of Khusro, the soldier who was put in prison by the Mongols, but I'm talking Khusro the poet, the Khusro the disciple of Sheikh Nizamuddin Auliya, Khusro the thinker, Khusro the person who wrote Qawwali for the masses, Khusro who gave so much breadth and depth to the local languages with his poetry. From there and through Kabir, and you could draw, as I said, a coherent line to Abdul Rahim Khane Khanam and up to Gandhiji. This was, and those who deny this cultural synthesis actually deny the philosophy of Gandhiji. And I find that actually hugely shocking even. Cultural synthesis, by the way, as a basis of nationalism, is part of it's an international fact. Why don't you go to France and tell them that they can have a nation without a cultural homogeneity? They won't understand it, right? Ibn Khaldun, one of the greatest Arab scholars, he said a nation requires a concept called the asabiya, some element of it, which belongs and essentially belongs to the thinking, mindset, attitude, belief system, values of a people. And that asabiya brings you together.
One of the very best examples is Indonesia. Absolutely, today I have watched in Indonesia, the Ramayana being done, and all the people doing the Ramayana, they are doing it very well, beautifully, are Muslims, and they don't see that as any kind of conflict. During Ramzan, they will have they fast every day. They follow all Islamic principles and all Islamic rituals with complete ease, and say no, Garuda is part of our culture. The alliance is called. The new capital of Indonesia, which is being built, the palace which will house the president and his staff is shaped around Garuda. Yes. And so it's a very part of the synthesis, and there is no conflict really. After all, the language, if you speak Hindi, right, it comes from this soil, right, and all Muslims in India speak it. That is synthesis. In Persia, which Persian denies the role of Firdausi? In the evolution of the Persian identity. यही है जी। अकबर साहब, राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो आज राष्ट्रवाद एक बड़ा कुछ लोगों के द्वारा नकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को काफ़ी एक रूढ़िवादी और अनुदार माना जा रहा है। लेकिन यदि हम बात करें 1947 से पहले की, जबकि राजा थे, राज्य थे, लेकिन संप्रभुता यहाँ नहीं थी, संप्रभु नहीं थे, उस समय जो हमें आज़ादी भी मिली वो सांस्कृतिक विरासत या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वजह से मिली। तो ये तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। देखिए मैं अभी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ। ये शब्द हमारे डिक्शनरी से हटा दें कि आज़ादी हमें मिली। आज़ादी हमने लिया, मिली नहीं। कोई हमें अंग्रेज देने वाला नहीं ना, इतना उदार नहीं हो गया था कि दे रहा था। हमने आज़ादी लड़ के लिया। ये गांधी जी ने उसको, उस लड़ाई को नॉन वायलेंट रखा, शांतिपूर्ण रखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बड़ी कुर्बानियाँ हुई, ऐसे ही थोड़ी अंग्रेज ने दिया। जी, तो वही सांझी हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो था, वो सांझी एक संस्कृति होती है और जिसमें हम सब आज हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आज वो राष्ट्रवाद इतना अनुदार और रूढ़िवादी क्यों माना जा रहा है कुछ लोगों? कौन मान रहा है? आप जो है ना, एक आवाज़ को इस देश की आवाज़ मत समझिए। ये देश की आवाज़ जो है अभी भी गांधी जी की जो हिम्स थे, गांधी जी के भजन थे, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और उसको एक फिर पॉपुलर स्लोगन भी बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे भाई भाई। तो क्यों ये हमारी जनता की ये पुकार थी, सिर्फ हमारे लीडरान की पुकार नहीं थी। इसी से तो अंग्रेज को खतरा था कि बस इस एकता से खतरा था। आज अगर कुछ लोग इसको नहीं समझते हैं तो मैं उन वैसे लोगों को मतलब अज्ञानी समझता हूँ, और क्या शब्द इस्तेमाल करूँ। तो और वो हमारी ही अपनी विरासत को नहीं पहचानते हैं। और देखिए हमारे मुग़ल दौर में भी जो अच्छी हुकूमत हुई उस दौर में, जिसकी वजह से इकॉनमी बढ़ी, ये हुआ। जी हाँ, एक दो मुग़ल थे जो इस बात को नहीं मानते थे, तो उनके अंदर फिर बहुत कुछ धंस गया। लेकिन जब ये मुग़ल हुकूमत बहुत ही क्रिएटिव पे थी, तब भी एक बहुत बड़ा फतवा आया था शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी का। उनका था कि द रूलर मस्ट नेवर डिस्क्रिमिनेट between his subjects. He cannot. Because Islam also says, what does Islam says? The Quran कहता है, कुरान शरीफ कहता है, अल्लाह को क्या कहता है? कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे आलम के रब हैं,
अल्लाह सिर्फ रब और मुस्लिमीन नहीं है, कि सिर्फ मुसलमानों के रब नहीं है, सबके हैं। तो अगर सबको, आपको हमको अगर रब ने बनाया है, तो फिर हम जो हैं, वी आर ऑल हिज क्रिएशन, तो एक दूसरे के साथ मिलके रहें ना। ठीक है, जब क्या होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस जिंदगी में तो हम एक और भाईचारगी के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे, और वो शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी के भाई इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे भी है कि उनको जब भेजा गया था तो ही वॉज कॉल्ड अ ब्लेसिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी, नॉट अ ब्लेसिंग टू ओनली वन कम्युनिटी। तो इसलिए ये फलसफा लेके, इस फलसफे के बेसिस पे हम एक रहें। हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं, आप किसी और तरह के भगवान में यकीन कर सकते हैं, लेकिन जो बार बार कहा था कि चलो जाना तो एक ही के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि यौगिक परंपरा को भी हम देखें तो वो भी एक मानते परमात्मा जिसको हम कहते हैं, तो वो तो एक उससे उठकर तो वही है, एक ही है सबके लिए। हाँ, सूफी रास्ता पकड़ लें, योगी का रास्ता पकड़ लें। हाँ, अब कुछ लोग हैं जो उनसे ही दूर हो गए हैं ऐसे, और एक पोस्ट कलोनियल फ्रेजियोलॉजी ले आ रहे हैं, जैसे ये सिविक नेशनलिज्म, ये पोस्ट कलोनियल है। और पोस्ट कलोनियल के साथ भी ये उसका वजूद या उसका ओरिजिन, एक हमारे शाह वलीउल्लाह थे यहाँ पे, जो 1690s में उनका मदरसा, उनके वालिद ने मदरसा शुरू किया था, और उन्होंने एक थियरी दी थी, थियरी ऑफ डिस्टेंस, जिसमें सिंथेसिस को उन्होंने एक कंटेमिनेशन माना था। वो मेरी किताब टिंडर बॉक्स में उसके ऊपर एक चैप्टर है। और उस थियरी ऑफ डिस्टेंस को अंग्रेज ने उठा के हमें बांट दिया, और फिर और भी मज़हबों से ऐसी आवाज़ ऑफ डिस्टेंस में आई थी। सिर्फ शाहउल्लाह नहीं थे, और भी थे, कुछ मुसलमान में थे, कुछ हिंदुओं में थे, जिन्होंने बांटने की कोशिश की। लेकिन जनता जो है ना हमारी, वो जानती है, वो जीती है, बल्कि जीती है, वो सड़क पे जीती है, गांव में जीती है, शहर में जीती है। आप हम यहाँ बैठे हैं, इस स्टूडियो के दरवाजे खोल के ज़रा सा उनसे नीचे जाके मिलिए, अभी जो सब्ज़ी बेच रहा है, और उससे पूछिए, उसे एक मुल्क चाहिए, सबका मुल्क चाहिए, या बांट के रहने की मुल्क चाहिए, और वो अभी बता देगा आपको कि हमारे जो कल्चरल इतिहास है उसका मतलब क्या है। अकबर सर, जो आपने अभी बताया कल्चरल सिंक्रेटिसी एंड पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव, डू यू थिंक academically and politically also we need to sort of change the narrative around this? Are we still stuck in that Western concept of nationalism and what the Kipling's white man's burden? Are we still following that in the narrative? I mean, you mentioned briefly in your latest book as well, the Macaulay Education, where Sanskrit was put even below the level of an abridged English textbook. The exact thing which you refer to is basically this eminent fool, Macaulay, actually thought that the whole of Indian literature, and by that he meant whether it was written in Sanskrit or Persian, right? He called it Indian, Asian, and of course, those borders of India were from the borders of Persia to Burma. So his concept, India itself geographically was a different space. So he thought that the whole of our scholarship, the whole of our academic history, the whole of our philosophical history was worth less than one single shelf of Western books.
right? And I had to, I mentioned in this book that all he had to do was to look at the number of titles which were published in his lifetime. बात पहले की तो बात छोड़ा या अपनी जिंदगी में only in Calcutta. He came here as the law member and lived in Calcutta. I think his house now has become the Bengal Club. I said all you had to do was just look at Calcutta. और Calcutta में क्या debates चल रहे हैं? उस जमाने में राम मोहन राव का डिबेट चल रहा था, ब्राह्मण समाज का चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था. As people were thinking and rethinking their positions. And to be so dismissive, right? That was the culture of racism that I'm talking about. And this racism actually took many forms, many dimensions. I'm very saddened when I find eminent Indians, even today, right, in some form of the other, out of either frustration or misplaced ego, parroting the language of such thought, of racist thought, divisive thought. That is not part of the essence of Indian living is basically harmony. क्योंकि वो उस समय का इतना गहरा उनके दिमाग पर असर है या उन्होंने इम्बाइब कर लिया है कि जब कुछ नई बात होती तो शायद वो स्वीकार नहीं कर पाते उसको. नहीं, मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि स्वीकार नहीं कर पाते हैं. समझदार सब हैं, अकल सबके पास है, लेकिन उनको स्वीकार करने, सच्चाई स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं है. जब उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा आ जाता है, और हर तरफ से वे होगा, अगर आपके पॉलिटिकल एजेंडा आ जाता है तो फिर आप जो है आप बांटने की सोच निकल लगते हैं, और जो भी करे गलत करता है, जो भी करे गलत करता है. That brings me to my next one, which is the elephant in the room. I mean, Hamid Ansari recently made these sort of assertions against India. He made such assertions, and I'm afraid that he has actually, I think, placed a curtain between himself and his own scholarship. I don't know what has motivated him to say this, but what he said was wrong. What he said is, as I think I have mentioned this before, what he said was completely antagonistic to everything Gandhiji taught, everything Gandhiji said, everything Gandhiji lived and died for. So how can a person like him, who has been given the highest positions that this country can give, and probably would like to see himself also, how can you deny everything that Gandhiji lived, stood for, died for? That is hurtful. That is hurtful. जिस मंच पर उन्होंने ये बात कही इंडियन अमेरिकन, तो जहाँ से भी मंच पे करें, छोड़िए, वो तो अलग बात है कौन मंच देता है. और हर दुनिया में 50 किस्म के मंच होते हैं कि कोई दूसरी सरकार जो हमारे हॉस्टाइल है, दुश्मन है, लोग पैसा फेंकते रहते हैं, बताते रहते हैं, हज़ारों मंच. ठीक है, मंच से वो अपनी जगह पे है, लेकिन दुख मंच से नहीं है. वो दुश्मन का मंच होता है. दुख इस बात का है कि हमारे वतन के जब सीनियर लोग गांधी जी को भूल जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ गांधी जी गलत नहीं है, ये लोग हैं किसी कारण राजनीति में हों, राजनीति के बाहर हों, बस अपनी ही इतिहास को, और इतिहास मतलब अपनी जीती हुई सच्चाई को नाकार देते हैं. Final question, sir. Do you think, just coming back from all of these points that you just mentioned, coming back to, do you think there is, as India rises, do you think there is a Western or sort of misusing those Western institution to curb down on rise of India by going behind the door
or through the back door, and asserting on the cultural. Well, India will rise. India is rising because India is united. Right? The day we are not united, we will become a famished country. We will become economically famished. We will become intellectually famished. And worst thing is that we will have famished souls. The soul of India will have been turned into something un-Indian. Right? So the power of India lies basically in the power of philosophical, humanitarian and living harmony. In fact, our concept of harmony is so wide that it spreads across the world. It's humanitarian. And therefore, if it is humanitarian for the whole world, even more so is it for India. India is a world in itself. And that is the secret, and that is why it is the rediscovery of India rather than the discovery of India. And the rediscovery of India's own past, own cultural strength. It's a tremendous, tremendous strength. It is on the foundations of this strength that we are going to be and are becoming a major 21st century power. Mr. Akbar, thank you. Thank you for your time. And to our viewers, once again, Mr. Akbar's latest book, Dulali Sahib and the Black Zamindar, it's out now. You can get your copies in bookstore or online. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.